Hello friends, welcome back to the YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing unit 2nd of educational technology and ICT, that is the teaching learning aids and instructional objectives. And we had discussed about the meaning and significance of teaching learning aids and their types. And today we are going to discuss about the role of radio and TV as educational tools. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो स्टोरी है रेडियो एंड टेलीविज़न की इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, it is really the story of how learning first became mass scalable, borderless and democratized. एंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ये जो टेक्नोलॉजीज़ थी इनको मेनली यूज़ किया जाता था इन दी क्लासरूम टू एनहांस द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ रेडियो इन एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिनेमा ऑफ द माइंड। रेडियो जो है इट बिकेम द फर्स्ट ट्रू डिस्टेंस लर्निंग रिवोल्यूशन, बिकॉज जो रेडियो है इट डिड नॉट नीड रोड्स, बिल्डिंग्स और इवन लिटरेसी, बट रादर इट जस्ट नीड ए सिग्नल एंड ए रिसीवर। और जो और स्ट्रेंथ है रेडियो की, दैट इज़ इट इज़ रीच विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। रेडियो वेव्स जो है दे मेनली इग्नोर जियोग्राफी इंक्लूडिंग माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। सो जो रेडियो है दैट इज़ नॉट अफेक्ट विथ माउंटेन्स, डेजर्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। सो दिस feature makes radio a lifeline for education in remote regions, including in the parts of South Asia, Africa and Latin America. And it is also important to note that कि जो रेडियो है this is an example of hot media and इसका हमें लार्जेस्ट रीच देखने को मिलता है इन रूरल इंडिया एज वेल। सो जो रेडियो है इट वाज नॉट जस्ट अ मीडियम बट रादर इट वाज एन एजुकेशनल इक्वालिटी इन एक्शन। सेकंड, टॉकिंग अबाउट दिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो रेडियो है इट एक्ट्स एज अ वन ट्रांसमीटर एंड इसके हमें मिलियंस ऑफ लिसनर्स देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर आल्सो बैटरी पावर्ड रेडियोस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं आल्सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस फीचर मेड रेडियो द मोस्ट स्केलेबल एजुकेशनल टूल ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक, जो रेडियो है इट आल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, बिकॉज जो रेडियो है इट एक्सेल्स इन प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, स्टोरी टेलिंग। दिस बेसिकली अलाइंस विथ अर्ली लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज, जहाँ लिसनिंग जो है दैट प्रीसीड्स रीडिंग। जो रेडियो है दिस ऑल्सो एक्ट एज एन educational model, and there are various educational models of radio like interactive radio instruction. This is one of the breakthrough model of radio, because जो radio teacher है that guides the class and जो students या जो people है they respond physically or verbally, like for example stand up, repeat after me, clap twice, etc. This basically transform radio from passive quasi-interactive learning. Similarly, school broadcasting जो है it's also important educational model of radio, which include the curriculum-based programs, dramatized history lessons or current affairs, which makes learning engaging and more narrative-driven. Similarly, open university model जो है it is also important educational model of radio, like बहुत सारी institutions जो है especially BBC in collaboration with Open University, they offer broadcast lectures, they educate
working adults. This is how through these educational models जो रेडियो है that becomes जो learning है that becomes lifelong and flexible through radio. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टेलीविजन इन एजुकेशन. जो टेलीविजन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंडो ऑफ द वर्ल्ड. जो टेलीविजन है इट बेसिकली एडेड extra features that basically radio lacked. Like जो television है it had added vision, emotion और demonstration. मीन्स जो रेडियो है उस पर हम खाली सुन सकते थे, उस पर हम खाली फील कर सकते थे, लेकिन टेलीविज़न के थ्रू हम देख सकते हैं, हम इमोशंस को ऑल्सो फील कर सकते हैं और हम ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. लाइक जो टेलीविज़न है it has a visualization power. Like जो TV है that can show microscopic processes like cell dividing. It can also show time-lapse events like plant growth as well as also the dangerous experiments like chemistry reactions. So through it is visualization power है जो TV है that bridges the gap between abstract concept and concrete understanding. Second, talking about its effective impact, that is the emotional learning. Unlike textbooks, जो TV है it can inspire, it can shock and it can persuade the people. And it can offer various programs on climate change, poverty, wildlife, which ultimately shape the attitudes and values of the people rather than only knowledge. ठीक, जो टीवी है इट आल्सो एक्ट एज ए मॉडल ऑफ टीचिंग बिकॉज जो टीवी है इट अलाउज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू ऑब्जर्व एक्सपर्ट एजुकेटर्स और आइडियल टीचिंग मेथड्स विच अल्टीमेटली becomes the indirect teacher training for teacher student. ठीक, for talking about some educational models of television, there are various educational models of television like edutainment, that is also called the informal learning. थ्रू इनफॉर्मल लर्निंग बहुत सारी प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू द मासेस लाइक सीसामी स्ट्रीट या नेशनल जियोग्राफी, जिनमें एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन जो है उनको ब्लेंड किया जाता है, जिसके थ्रू जो पीपल है दे एंटरटेन एज वेल एज दे आल्सो लर्न, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द हाई एंगेजमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिटेंशन. Similarly, direct classroom teaching जो है this is also an educational model of television और formal model. Like बहुत सारी countries जो है they use TV as a main teacher, and there are also large scale TV schools available in various countries, especially for rural or teacher scarce regions. And so this is through these direct classroom teaching जो education है that becomes possible without the physical teachers. Similarly, CCTV, that is the closed circuit TV जो है this is also an important educational model of TV जो कि mainly use किए जाते हैं within the institutions to broadcast surgeries, to demonstrate lab experiments, जहाँ वन एक्सपर्ट जो है ही टॉट वेरियस स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली. ठीक, तो टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर्स रोल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एंड टीवी. थ्रू द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टीवी दिस इज़ वेयर जहाँ रियल रेवोल्यूशन जो है दैट हैपन. Because before the invention of TV and radio, before the mass media, जो टीचर था वो सोल अथॉरिटी थी नॉलेज की. मीन्स जो टीचर था वो खाली नॉलेज प्रोवाइड करता था, ही इज़ ए कंटेंट प्रोवाइडर और अथॉरिटी. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड TV,
जो टीचर है he becomes facilitator. He starts to guide discussions after broadcast. He starts to clarify doubts, and he also becomes interpreter. He simplifies complex broadcast content through radio and TV, as well as he also becomes a moderator who encourages participation and who connects lessons to the real life experiences. So this marks a major shift from sage on the stage towards the guide on the slide, guide on the side. ठीक. And जो invention है TV and radio की, this ultimately brings standardization of education. So जो evolution है mass media का, जो invention है mass media tools का, these tools solved a huge inequality problem. Like they started to provide same lectures, same quality, same content to everyone, every people, whether in metro city or remote village. And इसका हमें ultimately huge impact देखने को मिला that further reduced the educational disparity between the rural and urban people, and this also democratized access to expertise. And besides that, there are also the limitations of radio and television, or we can say disadvantages, because डिस्पाइट देयर पावर, ये जो टूल्स हैं इनके हमें ऑल्सो सीरियस कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ द लिमिटेशंस आर वन वे कम्युनिकेशन. जो टीवी और जो रेडियो है, दीज आर वन वे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ रियल टाइम डाउट सॉल्विंग जो है दैट इज़ नॉट डन, एंड देयर इज़ ऑल्सो नो पर्सनलाइजेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस एंड दे कैन नॉट गेट एनी आंसर. सेकेंड, देयर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड शेड्यूलिंग. लाइक जो स्टूडेंट्स थे उनको मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कोई प्रोग्राम होता था वो देखना पड़ता था. इफ़ स्टूडेंट इज़ बिजी दे मे मिस द ब्रॉडकास्ट, so they may miss the lesson. They cannot rewind in this like this pre-digital era. ठीक. Third जो है that is the passive learning risk. Through these tools जो students हैं they became viewers rather than only listeners, which ultimately जो active engagement है that becomes less. Fourth जो है that is the lack of individualization. जो TV and radio है it does not cater the individual differences because it remains same for all and there is no adaptation to the learner needs. ठीक. And there is also a 2026 perspective evolution rather than extinction. Now in today's times जो radio and जो TV है that did not disappear but they have evolved, they have developed into smarter interactive forms. Like जो radio है it had evolved into podcasters, जो modern version है radio के that are now on demanded, personalized or global. Like for example Spotify is there available, Apple Podcast is there, जहाँ जो people हैं they can pause, they can replay or they can niche topics which ultimately promotes the portable learning. And जो television है it had similarly evolved into streaming and YouTube, because जो modern evolution, जो modern development है television की that we see today in terms of YouTube and OTT platforms. And through the on these streaming and YouTube platforms we can search the content, we can write interactive comments, we can have an access to everything,
and there are also algorithm based recommendations. ठीक. So this is how जो टीवी रेडियो है it had shifted from passive now towards the interactive learning, because unlike old TV जो learners है they can pause, they can now ask questions, they can comment, and they can also rewatch difficult concepts. This also solves the biggest limitation of mass media. And there is also a deep conceptual insight, that is कि जो mass media है it had marked a critical shift, that is from localized learning or classroom bound learning towards the broadcaster learning, that is one to many. And जो today आज हम shift देखते हैं, that is mainly the networked learning, that is many to many. ठीक. Now at conclusion we had learned that कि जो रेडियो है it gave education a voice, and television जो है it gave it vision, and internet जो है today that gave it interaction. So radio and television जो है they did not just teach lessons, but rather they refined who gets to learn where and from whom. ठीक है. I hope it is also clear to you. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. So that is it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.